It's like if you work hard enough, so everything comes into place, right? Right. And then talking about the number of subscribers and followers, right? It's all the love that people show, and I honestly believe that they are just the numbers, right? So it shouldn't change how we react. So it's all about कि आपने अच्छे से reach out करा and I felt excited. Parents अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते थे, मेरे को कुछ नहीं पता था. So they explored on my behalf कि तू चल engineering कर ले, and Thapar is a very great university कि आप तो वहाँ पे चले जा. And I got admitted in that university. And then someone told me कि भाई IT में scope है, आप थोड़ी coding कर लो. वो करते करते I got my very first job. How do you get a mentor? How do you find one? जो मेंटर वर्ड है ना, आई थिंक इट्स वेरी मिसअंडरस्टूड वर्ड. लोगों को लगता है कि मेंटर इज समथिंग जो आपको दूर जाके फाइंड करना पड़ेगा. कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वहां पे इतना भी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट. So about your transition from part-time jobs to your IT career, how did you do that? I felt like all the people of our community, they have chosen Ontario. There are advantages and disadvantages as well, right, of having your own community. We have a strong community presence here in Canada. That's why I feel like we are well respected, especially after COVID. Right, the government, they have failed to. The candidate pool has increased exponentially. Yeah. Right? Not only immigrants but also the other capable candidates who are native here and all. At the back of my mind मेरे dots connect हो रहे हैं कि music change हुआ है और कुछ हुआ है. But इतना हुआ ही था that some ladies called it me. I think it's more about the personal experiences. Yeah. मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे नहीं होता. We have, again, I also consume the same social media feed that you have, right? So we are seeing a lot of things. So how did you tap into RBC? I'll be very honest, ठीक है, मैंने RBC में कब अप्लाई किया मेरे को याद नहीं था. Getting an interview call was never a challenge for me. I was always getting rejections. If you are planning to move abroad and you desire growth, be it professionally, personally or mentally, और आपको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करनी है, then you are at the right place. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस कमल टॉक शो में, where we will talk to the people who have made it to the professional world after moving abroad. और वो कोई भी हो सकता है, entrepreneurs, businessmen or working professional. Because the point of this podcast is to learn from the professionals. How was their journey and how they did it. And our very first guest for the podcast is Sahil Gogna, Canada's one of the top influencer who's been helping international students, immigrants, and job seekers. And as of now, he has almost 150k followers on Insta. But the point is, it's not about the Instagram followers. It's about the value that he's been putting into the life of students, immigrants, and any job seeker. And in this podcast, we'll learn about his experiences. We will learn how to get a job, the difference between data scientist, data analysis, and a data engineer. And we'll talk about mentorship as well. We have talked about life in Canada and whatnot. Let me tell you, this podcast is going to be very beneficial for you if you are planning to grow in Canada. And I know that you'll love the conversation and it will add value to your life for sure. Enjoy the conversation. Alright, so we have our very first guest on the podcast, and his name is Sahil Gogna. I'm really sure if you are interested in moving abroad, if you are here, तो आपने हमको जरूर देखा होगा. So let's just introduce him. Let him introduce himself in his own way. Sahil भाई, कैसे हैं आप? Thanks a lot to invite me on this podcast. And for my introduction, my name is Sahil, and right now I'm working as a data engineer in Canada. And apart from this, I also do content creation on Instagram, YouTube, LinkedIn. And mainly my focus here to make people aware of their choices towards the professional jobs, especially related to IT. And this is what I have been doing so far in Canada. And this is what I met to people. And Alright, so the first question I have is, क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं? oh man. Alright, the first question is, so I'll tell you something about the thing that I have in my mind. First question is, do you believe in destiny? I do. You do? Yes. Let me tell you about my experience about it. So, when I planned, okay, I'll start a podcast, I had a list of like 15-20 guests. You were like at the last of it, कि मैं ऐसे थोड़े कम लेवल वाले फॉलोअर्स जिनके होंगे उनसे बात करूंगा पहले, then I'll show him. I wasn't really sure कि if you will say yes or no. Then like turn of events, we met, we talked, and suddenly see you are the first guest on the podcast, and I'm really glad. I'm really thankful
So welcome again, and let's just move on to the questions now. Thank you so much, bhai. And talking about the destiny, see, it's all about what you do, आपके efforts, right? It like I didn't come to your house and told you कि मेरे को कमल आपके podcast में, right? So you did some efforts, you reached out to me, and that's how we became good connection. तो वैसे ही है कि मतलब the moment I told you कि हाँ मैं destiny में यकीन करता हूँ, it's like if you work hard enough, so everything comes into the place, right? Very cool. And in talking about the number of subscribers and followers, right? It's all the love that people show, and I honestly believe कि they are just the numbers, right? So it shouldn't change how we react. So it's all about कि आपने अच्छे से reach out करा, and I felt excited कि यार जो energy जो enthusiasm आपने दिखाया, so I was glad. I said why not, let's do it. Thank you so much for these kind words. और इससे साहिब भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ कि इंडिया में आप क्या आपका स्टडी बैकग्राउंड है रहा है, एंड देन जॉब करिए तो आपने क्या करी है, एंड व्हाई डिड यू चूज कनाडा? So it's honestly a very interesting story of mine कि India में I did my bachelor's degree in electronics and communication Thapar University, and when I got into university कुछ as such वही होता है कि 12th में अच्छे मार्क्स हैं, पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते थे, मेरे को कुछ नहीं पता था, so they explored on my behalf कि तू चल इंजीनियरिंग कर ले, Thapar is a very great university कि आप तो वहाँ पे चले जा, and I got admitted in that university, and then throughout my university, I was very active in clubs and talking to people, hosting events, right? So this was something that I was actively involved. But पढ़ाई के मामले में, like I have second thoughts कि मेरे को क्या करना है. I was never sure. So that's how my journey has been so far कि मेरे को शुरू से clarity नहीं थी. And then someone told me कि भाई IT में scope है, आप थोड़ी coding कर लो. वो करते करते I got my very first job. Right, so in India. In India, right? It was 6 months of internship जो अपने last semester होता है. Okay. And then I also got a full time offer from them, तो मैंने उसको almost 1 year उसको continue करा. Okay. But then there was a pivotal point in my life when I met my mentor. He was my senior manager at that time in the company. So we grew a very strong bond. And वहाँ से मेरे को चीज़ें की clarity आनी शुरू हुई. It's like कि he showed me path की life में decisions कैसे लेते हैं, right? And from that moment I thought कि यार okay, it's time to do something different. But again I wasn't clear, ठीक है, मेरे को mentor ने थोड़ा रास्ता तो दिखा दिया, but वो होता है ना आपने I've talked so many times in my videos कि TVF Pictures is one of my favorite TV shows. It came in around 2014-15 में आया था, but there's a very impactful line जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया के ग्रेजुएट्स जब अपने 9 to 5 से बोर हो जाते हैं तो उनके पास एस्केप के सिर्फ 3 चांसेस होते हैं. आइदर दे चूज MBA, दे आइदर गो फॉर मे बी मास्टर्स डिग्री, राइट, और दे चूज टू स्टार्ट. At that time I had a fourth option as well कि why not go to Canada, because my sister was already here, right? Yeah, okay. Again this wasn't something that I wanted to do, but it was more of कि मेरी छोटी सिस्टर है उसको सपोर्ट मिल जाएगी. So that's how I landed into Canada. But then came the important part. कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से सिटी, राइट? My scores and my profile was strong enough to land me into Concordia University, उसमें electrical and computers का program है, so I also. So I'll stop you here, and before moving on to the university part, I have this one question. This is my personal question basically. When you say mentors, how do you get a mentor? How do you find one? So it's basically a blank concept in my mind कि भाई किसी को कैसे अप्रोच करते हैं उसको मेंटरशिप के लिए कि वो हमें मेंटर करें किसी भी चीज के लिए, either life or career advice. How did you do that? Is it just personal bonding with someone, or? I think that there are two types of things, right? One thing is कि you keep on doing what you are doing right now. You become so good at it that people around you start surrounding yourself with strong people, right? ये जो mentor word है ना, I think it's very misunderstood word. लोगों को लगता है कि mentor is something जो आपको दूर जाके find करना पड़ेगा, किसी को reach out करते, right? आपके okay, in my life I'll tell you significance of mentorship. ये चीज कैसे मैंने अपनी life में grow करी, right? The very first mentors, again, mentor is not something जो millionaire billionaire हो या फिर अगर आप अपनी job करते हो या फिर बहुत top पे, it is someone who is just better than you at some field. At that stage of your life, basically. Yeah. Right? So try to look around you. ठीक है? Your mentor can be your parents. Your mentor can be your best friend. Your mentor can be your teacher. That's the closest circle, right?
So mentor is someone who guides you in that direction. For example, throughout my life, there's like my parents have supported me, right? तो स्टार्टिंग में मेरे को मेंटरशिप मिलती थी कि डिसीजन कैसे ले, क्या करें, राइट? सो इट वाज माय पेरेंट्स. देन व्हेन यू ग्रो अप, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही इज स्पेशलाइज्ड इनटू फिटनेस, राइट? The moment he started out into fitness and his passion, he was always better than me in that thing. Okay. So he became my mentor. When I landed a job, right, my manager related to the jobs and how should we go into career, he was my mentor because he was better than me, right? This is how you utilize your inner circle to get good mentors. Once you learn from them, right, and now you understand कि आपको life में चाहिए क्या. That's the point when you move out of your comfort zone या फिर out of your inner circle and then you start looking for people. अब उन लोगों तक कैसे पहुंचे mentorship के लिए? That's That's the next question. That's the question. Again, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की मेंटरशिप ढूंढ रहे हो, राइट? लेट्स से यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर. सो अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको वहां पर किस टाइप के कहाँ पे मेंटर्स मिलेंगे? ऑब्वियसली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. Either you create good content, not either, like you'll have to create good content and reach out to them, show your work, get some feedback, right? Try to win the respect कि भाई ये बंदा अच्छा कर रहा है. That's how you get validation. That's how you reach out. क्योंकि mentorship ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है नहीं and then you're saying कि मेरे को कुछ बता दो, right? So you need to show them कि because you need to tell them or show them that their time will be worth it, right? Because you are someone who knows how to put efforts. Similar way, if you want to get a professional job anywhere, like if you want to get a job, in fact, right, the best way to find a mentor is LinkedIn. If you want to, let's say, do theater, do acting, right, the best way is you go to the weekly theater classes or you join some sort of groups or maybe जो weekend में theaters होते हैं वहाँ पे जाके ढूंढो कि बंदे कैसे perform कर रहे हैं. So mentorship is all about you need to firstly find someone जिसके साथ deeply connect करते हो. Again, there can be hundreds of content creators, but एक बंदा होता है जो stand out करता है. Yeah. कि यार ये बंदा अच्छा है. I relate a lot to him, right? So basically, you'll have to be at the right place first. Okay, so if you want to, if you are seeking mentorship, and let's suppose if I ask you to mentor me, so for social media, right? I'm just learning, I'm exploring, right? So I have to be in that circle first. Obviously, I can't ask someone else to just guide me on social media, right? And then reach out to the people who you think are in the same niche, probably, or I think more than niche with the same mindset who wants to grow, right? You feel like कि आप उनके तरफ कुछ contribution दे सकते हो. They can contribute. Again, it need not to be transactional thing. It's more about कि if they're putting in the efforts, right? अब उनको आपसे क्या मिल सकता है? Respect and a feeling, a sense of achievement. For example, let's say for my mentors, what I have always delivered is कि I'm not saying about कि मैं अभी जो चीज़ के लिए मैं काम करूँ उसके results मिले. But it's about if they are investing their time in me, मेरे को कुछ चीज़ें बता रहे हैं ये करो वो करो, I make sure कि जो भी चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली हैं कि मेरे एंड से कभी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इन चीज़ों में दिक्कत ना है. रिजल्ट्स आर द आउटकम्स, राइट? बट मोर देन दैट व्हाट आई वुड से इज कि आपका एटीट्यूड क्या है. सो बोथ ऑफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट बिकॉज उनको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि यार साहिल ने अगर लाइफ में कंट्रीब्यूशन करी है, अगर वो कल को कहीं किसी को बताते हैं कि ये बंदे को आप जानते हो, right? And this is my mentee. That's a valid point. This is when I realized. I'll tell you, the very first mentor जो मैंने अभी आपको बात करी वो मेरी पहली कंपनी में मिले थे, right? He is my elder brother and elder brother to me, right? Not by blood, but since through the you've shared a special bond, basically. Exactly, right? So क्या हुआ कि we know more than 7-8 years. एक दूसरे को जानते 7-8 साल से. तो recently we went out to shoot some videos and there someone praised me and all. Then I mean, he at that moment he told me, Sahil, I'm so proud of you. Like throughout my 7 to 8 years of our journey, he has never told me that, right? So that sense of achievement that he felt that, because even that time he was next to me and people were asking me about mentorship and all, I told them, this is the guy. I owe my professional career to him, right? And the moment you achieve, you feel that, okay, I did really contribute to this guy, right? And he's doing good. And that's the prize for him, right? So that's basically how mentorship works. Yeah.
Well, that was a good question from my end. Yeah. All right, so moving on to how you came to Canada, how did you select the universities? Even for that, like I told you that, like I wasn't very sure कि मेरे को करना क्या है. It's more like I have always that mindset, the curious mindset to explore the things, right? And इसमें भी I would say कि मेरे parents ने मेरे को बहुत support किया. They never questioned me भाई ऐसा क्यों करना है, because I was getting admit from Concordia University, and then I decided कि मेरे को यार college में जाना है. I don't want to go to university because I wasn't sure कि मेरे को IT में करनी है कि नहीं करनी job. Because Colleges in college here, like diploma. हाँ डिप्लोमा कोर्स, राइट. मेरे को ये था कि मेरे को कहीं पे पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि मेरे को इतना था, क्योंकि मैंने आपको अपने मेंटर के बारे में बताया, राइट. आई वाज प्रीटी श्योर कि कल को मेरे को आईटी में जॉब लेनी होगी. मेरे में बेसिक कैपेबिलिटी तो है कि मैं चीज़ों को सीख सकता हूँ. बाकी चीज़ मेरा मेंटर है, मेरे को बता देगा कब क्या चीज़ कैसे करनी है, एंड आई विल गेट अ जॉब समहाउ. मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं था, राइट. सो आई थॉट व्हाई डोंट आई यूटिलाइज दिस टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स. सो व्हाट हैपेंड कि मेरे को एक मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पे इतना भी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं था, टू वेरी ऑनेस्ट. वो आपको पता है कॉलेजेस में, लाइक स्पेशली फॉर समवन जिसका चीज़ों को समझ होगी हाउ थिंग्स वर्क. लाइक मैं कोडिंग में था, एक साल 1.5 साल मैंने काम कर लिया कंपनी में, एंड आई परफॉर्म्ड pretty good there as well. Decent थी मेरी परफॉर्मेंस, राइट. आई वोंट से कि I was one of the best coders there in my team, because हर बंदा 25 साल 10 साल एक्सपीरियंस था, राइट. But that's how things happen, right? So he was there to guide me. तो मेरे को था कि यार चलो पीछे है अपने बैक में, मेरे को संभाल देगा. And then I just came to Canada. Very first thing I did, I started looking. यहाँ पे जो part time jobs का trend था, right? Yeah. For me, obviously part time job was more of a survival thing, but for me it meant something different. For me it was some time to have different experiences, different exposures, और some way जिसमें वो थोड़ा और contribute कर पाए. Since हम लोग इंडिया में, and English is not our first language, right? So I was always a bit hesitant to talk in English. ठीक है. I won't say कि मैं अच्छा नहीं था. I was good, decent enough अगर stage पे जाके handle करना हो. I had that kind of experience, but you still need a level of confidence to have a conversation in English with the natives, right? Yeah. तो I thought very first job should be call center job. ठीक है. क्योंकि jobs अवेलेबल होती हैं कि आई थॉट कि अगर मैं ढूंढूंगा कि आई डोंट वांट टू डू, मतलब कोई भी जॉब जो मिल गया, आई वांट टू चूज कि मैं कौन सी जॉब मिला. सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द कॉल सेंटर जॉब्स. एक जगह जॉब मिली, उसमें यू वोंट बिलीव आई जस्ट वर्क फॉर 2 days. ऐसा हुआ कि वहाँ पे अगेन द कल्चर एंड द टाइप ऑफ वर्क इट वाज, लाइक वी हैड सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स जो आपको फोन कॉल पे यू जस्ट हैव टू रीड आउट लाइक अ मशीन, एंड देन हैव टू गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जो भी बंदा कॉल पे है. No, I can relate. So I've worked in a call center for 2 months in India. So I know they were like UK clients. So yeah, I get it. They were a flow. You just have to Exactly. work like a And we coming from a background, India background, we have particular kind of accent जिसमें पता लग जाता है कि Yeah. he is not native, right? True. तो वो 2 दिन मेरे को जितनी गालियाँ पड़ी, I cannot tell you. कि मेरा कनाडा में 3rd day था. I joined this job and उसमें you are just reading out the script. उनको लग रहा था कि स्कैमर्स हैं ये लोग, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं. So that was like वो 2 दिन मेरे कनाडा की जर्नी के स्टार्टिंग में सबसे मुश्किल दिन थे, राइट. एंड तीसरे दिन मेरे जॉब में जाने की हिम्मत नहीं थी. सो आई डिडंट गो थ्रू. ठीक है. आई जॉइंड सम अदर जॉब जहाँ पे मेरे को फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को ये था कि मैं थोड़ा अपना सोशल सर्कल बनाऊँ. सो आई वाज डूइंग 1 switch ऑन एन एवरेज पर मंथ. मेरे को था कि यार कर ही जाओ, क्योंकि पे तो उतनी भी नहीं, मिनिमम पे, राइट. उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उतना चल रहा था. But then there was certain thing कि यार मैं इस चीज़ को improve नहीं कर पाया. Then after a couple of months I joined again a call center, but this time I was mentally prepared. So वहाँ पे जाके I think I did decent enough. तो confidence आया, right? तो करते करते I did a lot of different kinds of part-time job, and then came a part I was living in Montreal. तो वहाँ पे the main language is French, right? Yeah. And see the things start happening when you surround yourself with strong people. So तब ये था कि जो मेरी वाइफ है नाउ, देन माय गर्लफ्रेंड, राइट, शी ऑलरेडी न्यू फ्रेंच. तो मेरे को चीज़ बड़ी कूल लगती थी. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर इनटू अ प्लेस, इनटू अ सिटी, और वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में आप बातें कर सको, आप समझ सको क्या हो रहा है. मैंने उसको पूछना कि स्ट्रीट बोर्ड के साइन का मतलब क्या है, राइट. एंड देन शी ऑलवेज सेड तू भी तो सीख सकता है, इसमें क्या है, राइट. सो वो जो एक पुश आता है, देन आई डिसाइडेड ओके आई एम गोइंग टू लर्न फ्रेंच. ठीक है. आई पुट एवरीथिंग. आई जॉइंड द फ्रेंच क्लासेस बाय द क्यूबेक गवर्नमेंट.
Yeah, there are classes. Yes, and they do pay you as well. तो मेरे को 750 के अराउंड मिलता था एंड थोड़े बहुत सेविंग में डाल के मतलब 800-850 में उस टाइम पे आपका महीने का खर्चा अच्छा चलता था बिकॉज आई एम नॉट समवन हु गोज आउट एंड पार्टी। मेरे को बस अपनी ग्रोसरी, अपना फोन बिल, अपना रेंट, ये 3 मेजर खर्चे थे तो वो मेरे $800 में पूरे हो रहे थे। So for 8 months I learned French. French में full time होता है, you have to clear exams जब next जाते हो, तो वो process था। Again I was like not able to complete, like मेरा PR motivation नहीं था, it was just to do You just conversation। wanted to learn. Yeah, तो मेरे में इतनी capability आ गई, I was able to do the basic conversation। So if I have to tell you like मेरे, आपने बोला कि यहाँ पे आके आपको part time jobs and क्या scenario था, so mainly जितने भी मेरे जो जर्नी थी part time jobs की, I tried to plan it in a way कि वो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करे and you know like those kinds of skills they never goes away, right? अगर मैंने अपने लैंग्वेज स्किल्स पे काम किया, अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया, अपने सोशल स्किल्स पे काम किया, I tried to get insights into different kinds of businesses कि भाई कैसे रन होते हैं, so though that kind of knowledge it goes long way। So that was my prime motive कि how I planned everything। That was good. And the French part, I'm planning to learn it, but now everybody knows, right? कि French सीख के PR में help होगी, तो जो सिखाने वाले हैं available, उनके prices are going up and up, and finding a good course, then learning it again, mentorship. You had one, so I'll have to look into it again. French सीख के obviously एक तो PR में help होगी, और दूसरा एक पर्सनल रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है ना, जो कि एक दूसरी लैंग्वेज सीखने से आई बिलीव आई बी एबल टू अचीव दैट टू। सो लेट्स सी हाउ द फ्रेंच पार्ट गोज। सो अबाउट योर ट्रांजिशन फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब्स टू योर आईटी करियर, हाउ डिड यू डू दैट? आप एक तो मॉन्ट्रियल से यहाँ, उससे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप कनाडा में कब आए थे, लैंड हुए थे फर्स्ट? मैं 2018 में एंड में लैंड होता अराउंड सितंबर अक्टूबर, so last quarter of 2018। Okay. Are there any differences right now in terms of, let's suppose, जॉब के बारे में भी बात कर सकते हैं कि चेंजेस कैसे हैं, मार्केट तब कैसी थी या अब कैसी है, और कल्चरल डिफरेंस, लाइक मेरे को यहाँ हुआ 2 साल हुआ, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक माई सर्कल बिगर इन अ वे कि मैं मल्टी कल्चरल फ्रेंड्स बना पाऊँ, बिकॉज व्हेन आई वाज इन इंडिया एक पर्सपेक्टिव होता है तुम्हारा कि बाहर जाऊंगा, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त होंगे, आई विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर, बट व्हेन आई अराइव्ड हियर इट्स डिफरेंट। 22 दिसंबर में मैं आया, एंड मैं लेट मी टेल यू जस्ट वन फनी स्टोरी। आई वाज अगेन, जैसे आपने कहा कि यू वर अ लिटिल बिट हेजिटेंट अबाउट इंग्लिश, राइट? सो मैं आया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि अब मैं सबसे इंग्लिश में बात करूंगा वहां जाके, एंड मैं लैंड हुआ, नहीं, मैं अपने ब्रदर के साथ स्टे किया, एंड नेक्स्ट डे सेम लेन जाते हैं जैसे पहले 2-4 काम करने जाना था, एंड माय ब्रदर टुक मी टू स्क्वायर वन, और वहां मैं गया एंड आई वाज प्रिपेयर्ड दैट आई विल से दिस एंड दिस कि हे हेलो कैन आई नीड टू गेट अ सिम, आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड, मेरी स्क्रिप्ट तैयार थी। मैं वहां गया, वहां एक इंडियन गाय खड़ा था, एंड मैं वहां जाके बस हेलो करने वाला था, हाँ जी भाजी हाँ जी भाजी किदा की चाहिए, केड़ी सिम चाहिए यार, फोन दे दिए तो मैं क्या यार ये क्या हो रहा है। सो हाउ टू टैप इन दैट मल्टीकल्चरल ग्रुप, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट अ क्लब गाय। वहां जाके फिर भी when you get a little tipsy and all, you can tap into that, you can go to the party, you can make a few friends, but if you want to learn from people, if you want to learn different cultures, how do you do that? That's a good question. I think जो आपने चीज बोली कि how times have changed, right? उसमें I would say कि जब, क्योंकि I have lived in a lot of different cities in Canada. सबसे पहले I came to Montreal. Montreal is a very multicultural city, तो वहाँ पे like I honestly got to interact with a lot of natives, and especially when I learned French, ठीक है, आप किसी को भी स्ट्रीट पे जाके हेलो हाई का बोल इतना नहीं जवाब दे, बिकॉज दे आर वेरी प्राउड इन देयर ओन लैंग्वेज, बट अगर आप उनको फ्रेंच में ग्रीट करते हो सो दे रिस्पॉन्ड बैक। आई आल्सो हैड कन्वर्सेशंस, आई स्टिल हैव लाइक जो मेरी लाइन लेडी थी वहां पे, राइट, शी इज अ ब्रिलियंट पर्सन, तो अभी उनसे मेरी बात होती है, एंड उन्होंने मेरी बहुत कंट्रीब्यूशन करी फ्रेंच सीखने में, राइट? सो एट दैट टाइम आई वाज एबल टू डू दैट। देन आई मूव टू हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया, तो वहां पे भी आई वोंट से आई हैड फ्रेंड्स लाइक फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, बट वहाँ पे आपको दिखते हैं दूसरे कल्चर के लोग, राइट? देयर आर वाइट्स, अपने स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे, देयर आर अदर कल्चर्स एज वेल,
बट देन आई मूव टू ओंटारियो, आई एम नॉट श्योर कि वो मेरा किसी पर्टिकुलर रीजन को लेके बायस है या फिर यहाँ, बट यहाँ पे यू सी कि लॉट ऑफ लाइक आवर कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सो इफ अगेन I'm not sure कि how to answer this thing, but I have also been to Vancouver as well. तो वहाँ पे भी मैं जो मेन सिटी में गया, तो I felt like कि all the people of our community they have chosen Ontario. So that's the main reason कि Then the GTA part भी. exactly right. So अगर आप थोड़ा अप नॉर्थ जाते हो, इवन इन ओंटारियो, वहां पे जाके आपको अपने कम लोग मिलेंगे, Community. right? Again, there are advantages and disadvantages as well, right, of having your own community. We have a strong community presence here in Canada. That's why I feel like कि we are well respected. Right now, you might have seen कि काफी चीजें गलत डायरेक्शन में भी जा रही हैं. We want to talk about that. Like, कि but- social media पे कैसे सब चीजें Right. But at the end, like it's a double-edged sword, right? So I have met a lot of natives there जो 25-30 साल pehले आए हैं. They're like you guys are lucky कि हमारी community presence इतनी strong है. So you don't have to go through racism and all of that stuff, right? So overall, I would say कि to answer your question, सबसे पहले कि how things have changed. उसके लिए I would say कि I have been hopping city to city. So in terms of culture, I'm not sure कि how things have changed, but one thing is for sure कि a lot of immigrants have come to Canada, especially after COVID, right? The government, they have failed to deliver to what they were expecting, right? Number two, in terms of jobs, I would say even in jobs, I know things have grown a bit tough right now. Yeah. Right? Primarily उसके दो ही reason है. One thing was कि industry was going through a very rough time due to recession and whatever it was happening. Right now industry is recovering, but still it's pretty hard to get job. Mainly due to the other reason कि the candidate pool has increased exponentially. Yeah. Right? Not only immigrants but also the other capable candidates who are natives here and all. तो सब अब एक ही candidate pool में जा रहे हैं. For 1,800 jobs there, the candidate pool is over, let's say 10,000, right? So I'm just giving you a figure, right? If you search about data analyst jobs in Canada, you'll get around a number of 1,500 to 1,800 jobs for past 1 or 2 months, right? But उसको apply करने वाले कितने, अगर हर application पे over 1,000 candidates आ रहे हैं, so you can see the competition, right? Yeah. So that's the thing, like things have changed, I'm not denying the fact, but again, now the thing is, like if you want to get a job, you'll have to be more than deserving. Just simply because you know certain skills, it won't get you a job. अभी आपको उसमें भी वो yearly review होता है ना हर कंपनी में, you'll have to exceed expectations to get a job as well. We'll tap into that, but before that, you just mentioned racism. Have you ever personally faced racism here? See, I feel I feel myself blessed कि मेरे को ऐसा कभी नहीं मिला, कभी ऐसे सिनेरियो में नहीं आया जहाँ पे I felt like कि racism हुआ है, because throughout my journey I have been blessed to have around like people around me जिन्होंने हमेशा respect करा है, be it our own culture, be it the culture, the Canadian people, right? Be it someone who has immigrated from other country apart from India. So जिनके साथ भी मैं रहा हूँ, I think it has always been a very constructive relations, right? कि and even around me, like then you enter into the professional world. वहाँ पे there's very less probability. I won't say there's no chance, but there's very less probability. You never know, because at the end they are also humans, right? But they are also like मैंने अपने end से ऐसा कुछ नहीं किया, but I feel like I have been lucky enough and blessed enough to be among the people who have always respected me. Probably it's just situational, I believe, because I have this one day on the Remembrance Day, I was in Dollarama. So we are new here, we don't know the culture and what all days are meant for, like Remembrance Day पर होता क्या है. So I was in Dollarama and at 11:11 they play some music all over Ontario, and you're supposed to stand in respect of the soldiers that have lost their life. Obviously I didn't know about that. मेरे को पता था कि Remembrance Day है, and I was in my own zone, and एकदम से डोलरामा शांत हो जाता है. मैं अपना सामान खरीदा हूँ, मैं at the back of my mind मेरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि म्यूजिक चेंज हुआ है और कुछ हुआ है, but इतना हुआ ही था that some lady scolded me, and if you want to take it as racism, go ahead, take it.
बट मेरा मानना यहाँ पे ये लगा मुझे वहां पर कि ठीक है, उस बात को पोर्ट्रे करने के अलग तरीके हो सकते थे, उन्होंने मुझे डांटा, वो मुझे आराम से बता सकते थे। बट अगर मैं अपने इंडिया में हूँ, अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ और मेरी कंट्री की कल्चर की या किसी चीज की कोई नहीं रिस्पेक्ट करा, आई माइट फ्लिप आउट। तो अगर उसको मैं हर चीज को हर चीज का भाई है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों है। अगर तुम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट लेके और हर चीज को कह दोगे कि ये रेसिज्म हुआ है मेरे साथ, यू माइट बी रॉन्ग देयर। So that's basically my take on racism. So again, जैसे आपने बताया कि ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, ऐसा कुछ फेस नहीं किया, you were like एक अच्छे सारे सिनेरियोज में से निकल के गए। That's the case with me. And if again person to person भी डिपेंड करता है, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। So yeah, I think it's more about the personal experiences. Yeah. मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे नहीं होता. We have again, I also consume the same social media feed that you have, right? So we are seeing a lot of things. तो अगर लोग फेस कर रहे हैं, that's why भाई हर कम्युनिटी में हर चीज में अच्छा और बुरा है। ईदर इट्स आवर कम्युनिटी एंड ईदर और ये जो कैनेडियन नेटिव कम्युनिटी है, कुछ भी। सो एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दी सम more constructive topics now. Did you start here as in RBC directly or you work somewhere else? So मेरा ये सीन था कि I started with the motor wheels company Auto. तो वहाँ पे I got a job as an ETL developer, which is again some work related to data, not exactly data engineering, but similar kind of you create data pipelines. तो उस पे काम किया and then I got into RBC as a data engineer. How did you tap into RBC? RBC is a big brand, guys, Royal Bank of Canada. So how did you tap into RBC? Obviously, your skills must be good. If you want to be humble, okay, let's say your skills are good. But how did you tap into it? How did you make connections? Obviously, you might have to make some connection over there. You can't just tap into a big company without having networking even. I'll be very honest, ठीक है, मैंने RBC में कब अप्लाई किया मेरे को याद नहीं था. I one day I randomly received a call कि RBC के साथ जैसे आपका इंटरव्यू लाइन कर रहे हैं and so I said okay, मेरा इंटरव्यू आप करवा दो. तो अगले दिन फिर से कॉल आता किसी और रिक्रूटर से. So basically I might have applied for 2 different applications और मेरे उन दोनों एप्लीकेशन में प्रोसेस शुरू हो गया. In parallel I was all like then I was actively looking for jobs, right? I was interviewing for a lot of companies. For me I never targeted any specific company. For me it was more of a profile because from very beginning I wanted to get into data space. I wanted to work with data and AI teams, and the particular profile that I was interested into was data engineering. When I graduated from college, data engineering is a field जहाँ भी आपको, I'm not saying कि freshers job नहीं ले सकते, but you have to be very skilled fresher अगर आपको job लेनी है. And at that time again I am a COVID graduate कि तब वहाँ उस टाइम पे people were getting laid off from their jobs, ठीक है. And again something similar कि बहुत ही ज़्यादा experienced candidates सब market में थे. I was getting a lot of interview calls. I'm not denying that thing, right? क्योंकि मेरा resume, how to express yourself on resume, how to reach out and everything, I was starting से मैंने उस चीज़ पे बहुत work किया हुआ. So getting an interview call was never a challenge for me. But the main thing that I was facing कि like second last round या फिर last round में जाके जो final round नहीं होता technical round, I was always getting rejections just because कि someone more experienced than me was getting that job, right? So then I realized कि यार I'll have to look for plan B. Plan B was कि अगर again everyone who wants to get a job, right? If you have a target profile in your mind, like मेरे लिए कोई company target नहीं थी, मेरे लिए वो profile थी target. If you want to target some profile, ठीक है. Second option can be कि आप ये देखो कि उस profile के साथ और कौन सी teams काम करती हैं, right? So you probably try to get into that particular profile and then you switch internally or whatever it is, right? So for me, again, ETL developers, they don't work alongside data engineers, but the nature of work is pretty much similar. कि आप data pipelines create करते हो, ETL processes के scripts लिखते हो basically. So I thought यार as an ETL developer, it might be easier for me to get a job. Not easier, but relatively easier because data engineering में you need particular skill set. कि आपको उन tools and technologies पे काम करना आना चाहिए. So I thought I'll target ETL developer jobs, and once I have 1.5-2 years of experience, then I'll switch. ठीक है.
So पहले मैंने वही प्लान किया, then I started doing it, I implemented it, and luckily everything worked out well for me. I got into that profile, and after that I was more adamant कि मेरे को भाई इस पे data engineering में जाना है. And at that time I was actively applying for jobs. ठीक है, I was interviewing like every week. It's like late 22, it's early 2022, right? तो तब I already got like good feedback from Scotiabank people कि भाई ये हम आपका next interview लेंगे, तो मैं उनके साथ भी process में था, and I'm pretty much confident कि हाँ भाई offer भी आ जाएगा. In the meantime RBC also reached out to me क्योंकि मैंने apply करा था. They didn't reach out to me like किसी और medium से, so on LinkedIn I might have applied for a couple of jobs. तो मेरे को 2 calls आ गई. I was parallelly interviewing for two interviews, और उसमें से एक interview then final हो गया, तो मेरे को offer आ गया, and I dropped out from that. So to answer your question कि किसी बड़ी कंपनी ब्रांड में कैसे जाएं, so yes, one thing is if you have good references you can apply for those jobs, you can get the referrals and go there. And other one is like I would say उससे भी पहले work on your profile. If you are strong, if you are a very well seasoned professional कि आपको पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आपको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. Because see, companies they are hiring to solve a problem, to make money, right? Companies का काम है पैसा बनाना. पैसा कैसे बनाना है? अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करके बनाएंगे वो पैसा, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दे नीड केपेबल पीपल, राइट? इफ यू आर समवन केपेबल इनफ टू टेल देम कि भाई कि मैं अपने ये स्किल्स को यूज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, which will eventually translate into money. So you are going to get the interview calls and the job list, right? So that's the thing. Like one thing is if you want to get into a company like RBC or any other brand, right? I would say networking. Yes, that's true. You need to get referrals, but even before that, you need to be someone कि अगर आपको कोई बंदा रेफर करता है, आप में भी वो skills होने चाहिए ना कि आप जॉब ले पाओ. So reference to work, because I have a friend in BMO. There was an opening for tax department. I have no background for tax department, right? So, but that friend just referred me and put some good word that this guy is a good guy, he's a quick learner, and he won't be leaving you guys very early. Like he won't be switching very early. And by the next day, I got a call for the interview. So at that point, I realized, okay, if someone puts a good word about you, reference do work, right? But again, I couldn't clear the interview because they had a very seasoned employee or option they had, so they selected him. But yeah, so reference do work. Yeah. And the limit of reference is they can only get you an interview call. Yeah. है ना, उसके बाद लोगों को लगता नहीं रेफरेंस का मतलब है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई उसकी तो रेफरेंस लगी, रेफरेंस का उसकी जॉब लगी है, वरना उसकी जॉब कहाँ लगती. आई मीन कंपनीज बड़ी, इफ यू सी द एमएनसी उनमें ये चीज नहीं चलती ना कि लेट्स से कि आई एम द मैनेजर एंड यू आर माय वेरी क्लोज फ्रेंड. I cannot directly hire you. There's certain hierarchy, certain processes जो आपको follow करना होता है. And if someone is getting a job through referral, it simply means कि कोई interview call आई है. It didn't mean कि भाई उनको कि सीधा ही जॉब. मैनेजर ने कहा है कि इसको रख लो, कल से बर्गर बनाएगा तो बोलो कि ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स की तरह कोई तुम्हें कह देगा कि अच्छा इसको कल से रख लो प्लीज तो रखे जाओगे. ऐसा नहीं होगा. तुम्हें तुम्हारी स्किल्स एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स है, तो अगर तुम्हारे पास रेफरेंस भी नहीं है तो आज ही तो कल यू जस्ट पास ऑन दैट स्टेज एज वेल. Yes, getting the core. On your social media you talk a lot about the data science field, data engineering. Yeah. So first thing, if you want to learn about it, follow Sahil, and he shares a lot of stuff on it. But एक फटाफट से quick brief कि data scientist, data engineer और data analyst में एक major difference क्या है तीनों field. So basically these three profiles they form a data science team, right? Data science team. अब बेसिकली कंपनीज का काम क्या होता है कि उनको अपना जो भी उनका डेटा अवेलेबल है उनको ट्रैक करके उसको एनालाइज करके उसको प्रिडिक्ट करके अपने कस्टमर के बिहेवियर्स या फिर स्पेंडिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से एन ई कॉमर्स कंपनी. अब अगर आपने अमेजन में देखा होगा कि आप एक आइटम खरीदते हो, कुछ भी आप ब्राउज करते हो, उसके नीचे आपको और सजेशन आ जाते हैं, राइट? सो बेसिकली दे आर ट्रैकिंग योर ब्राउजिंग पैटर्न की चीजें कैसे हो रही हैं. सो डेटा साइंस टीम का बस यही एम होता है टू स्टडी अबाउट द कस्टमर्स. और उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले चीज आती है डेटा इंजीनियर्स का. तो डेटा इंजीनियर्स आर द पीपल हु क्रिएट द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, द डेटा पाइपलाइंस
which makes data available to the data analyst and data scientist. Basically एक सोर्स से डेटा को उठा के दूसरे सोर्स पे डिलीवर करना है, और दूसरे सोर्स जो डेस्टिनेशन होती है, नॉट द सोर्स, जो डेस्टिनेशन होती है उसके कंज्यूमर्स जनरली डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट होता है, राइट. सो वंस दैट टीम हैज द डेटा, राइट डेटा, उसका डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि टू एनालाइज दैट डेटा, डू द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एंड देन ट्राई टू create the charts, right? What are the patterns? Identify those kinds of patterns, and to present those things to stakeholders. Stakeholders can be the business team, they can be the higher management. उनको बताना कि these are the products जिन्होंने अब तक हमारा अच्छा काम किया. These are products जो अच्छा perform कर रहे हैं. Then comes the role of data scientist. उनका basically काम होता है predictive analysis करना. Predictive analysis मतलब कि okay, इस क्वार्टर तक तो ये सेल्स अच्छी गई है, बट इफ दे एनालाइज पिछले 5 साल की सेल्स, पिछले 2 साल की सेल्स, इज इट गोइंग टू परफॉर्म इन सिमिलर वेज, राइट? हाउ द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर इज गोइंग टू चेंज. दे डू लाइक मशीन लर्निंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, दीस मॉडल्स, ताकि उनको प्रेडिक्ट कर सकें. एंड नाउ AI is becoming also part, like AI is also part of this data science team, जहाँ पे you might have seen कि large language models आ गए हैं, जिसमें I mean, there's no limit to that. Yeah, we can just talk about it for the next few days, and it won't end. Right? But yeah, I clearly get the picture. I'm a BTech graduate, but I had confusion between these 3 streams. But yeah, आपने समझाया कि जैसे data engineer, then analyst, then scientist का task क्या रहता है? Then I get a clear. And it's not a kind of hierarchy. Students को लगता है कि data analyst is a simplest job to get into. डेटा एनालिस्ट को लगता है कि एंट्री लेवल पोजीशन है, वहां पे हो जाओ, फिर आपकी प्रमोशन होती है, फिर आप डेटा इंजीनियर बनते हैं, फिर आपकी प्रमोशन होती है, आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, राइट? बट द रियलिटी इज दैट एवरी प्रोफाइल होल्ड्स अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस, उनका अपना रोल है, राइट? अब अगर आप डेटा इंजीनियर्स को रिमूव कर दोगे बीच में, तो उनको डेटा कैसे मिलेगा? हाउ जो क्लीन डेटा होगा, जो भी जिस फॉर्म में उनको डेटा चाहिए, राइट? एंड इफ यू अगेन, डेटा एनालिस्ट का काम होता है अपना, उनका अपना डिफरेंट रोल है, राइट? सो इट्स नॉट सम सॉर्ट ऑफ हायरार्की, it's like every profile has 3 cluster of main components. Exactly. Together they form value to the company. Yeah. मैं एक digital marketing professional, and I've been running from coding for I don't know how many years. Still मैं आगे वही फंस जाता हूँ कि अब so I've been into digital marketing for 5 years. अब मुझे अगर आगे मूव करना है तो डिजिटल मार्केटिंग की डेटा को एनालाइज करने के लिए आई हैव टू हैव अ स्किल ऑफ डेटा एनालिसिस. मतलब मैं अपने करियर में और आगे बढ़ पाऊंगा उस चीज को लेके. तो एक रोड मैप आपके पॉइंट से क्या है, सो दैट आई कैन थिंक कि अच्छा इस चीज को, इन चीजों को कंबाइन करके क्या मेरा, और अगर कोई वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग को चलो बाद में बात करेंगे, वैसे भी अगर डेटा इंजीनियरिंग में एंटर करना चाहता है तो बेसिक रोड मैप क्या है? You have touched 2 different profiles. आपने डेटा एनालिसिस का, आपने डेटा इंजीनियरिंग का, and these are 2 different profiles, right? Yeah. So and then you asked me a third question, जिसमें आपने बोला कि as a digital marketer कि आप कैसे अपने करियर में नेक्स्ट जा सकते हैं, right? I think I'll touch upon the data analysis वाला part, even for you as well, right? That's the biggest point. Students को लगता है कि data analysis mean कि आपने मेरे को पूछा कि मैं कोडिंग से हमेशा भागता हूँ, right? उनको लगता है कि लर्निंग डेटा एनालिसिस इज ऑल अबाउट लर्निंग कोडिंग एंड वो सब चीजें, राइट? डेटा एनालिसिस का सिंपल मतलब क्या है? इन 2 वर्ड्स का बहुत सिंपल मतलब है कि आपको अपने डेटा को एनालाइज करके डेटा को समझना है बेसिकली, राइट? अब डेटा को आप कैसे समझते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप पाइथन में कोड लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपको डेटा को समझना है, बिकॉज एट द एंड मान लीजिए मैंने पूरी कोडिंग करके आपको डेटा से वैल्यू डिलीवर कर दी और आपने कोई और टूल यूज करा, एट देन फर्क तो इससे पड़ेगा ना कि वैल्यू कौन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, किसके इनसाइट्स बेटर है, राइट? इफ इवन यू एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या फिर इवन समवन हु वांट्स टू गेट स्टार्टेड एंड दे आर लुकिंग टू यूज अ टूल, कि मैं कौन सा टूल सीखूं, ठीक है? वो टूल हम अपने पता नहीं फर्स्ट सेकंड ग्रेड से हम यूज करते आ रहे हैं, दैट्स द एक्सेल. दैट इज द मोस्ट पावरफुल टूल एंड मोस्ट अंडररेटेड स्किल. स्टूडेंट्स सबसे पहले भागता मैं पाइथन में कोड लिखूंगा, ये करूंगा. कंपनीज को तो एट द वैल्यू चाहिए, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ डेटा की क्या मे बी वो एक्सेल में ना एनालाइज हो रहा हो, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू मूव टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो डेटा एनालिस्ट होते हैं दे आर गुड विद देयर एक्सेल स्किल्स, राइट? सो दैट वेरी फर्स्ट थिंग इज even before that you need to understand this, you need to have this kind of mindset जिसमें आप एक्चुअली उस प्रोफाइल का सिग्निफिकेंस समझो. No company is going to pay you $70,000-$80,000 a year as a starting salary कि आपको पाइथन आता है, आपको सीखो आता है. उससे उनको क्या फर्क पड़ता है? Obviously
फर्क पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ कि आप किस टाइप की वैल्यू देते हो, राइट? अब किसी कंपनी में सब लोग सीक्वल यूज कर रहे हैं, सो दे डेफिनेटली दे लुक फॉर सीक्वल स्किल्स, बट उससे पहले दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। क्वांटिटेटिव उसकी जो एनालिसिस है Exactly. कोई किस तरीके से कर पा रहा है, हम्म। उसका सोचने का पैटर्न क्या है, वो आई गेस ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आप से कि क्रिएट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। देन अगर आप टूल्स की बात करें तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स टूल्स नहीं है इस प्रोफाइल में। यू विल हैव टू स्टार्ट विद एक्सेल, ठीक है? उसके बाद एक्सेल में ही आप 90% ऑफ द डेटा एनालिसिस आप एक्सेल में कर सकते हो। बाकी के टूल्स इट्स मोर लाइक कि प्रॉब्लम्स जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप अलग टूल्स में मूव करते हैं, बट एक्सेल में यू कैन डू एनी काइंड ऑफ थिंग। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को कर लो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर लो, डेटा विजुअलाइजेशन कर लो, सब चीजें हो जाती हैं एक्सेल में। एट देन दैट्स अ वन टूल जिसमें कुछ भी कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लर्न सीक्वल, ठीक है? वन विजुअलाइजेशन टूल फॉर एग्जांपल पावर बीआई या फिर टैबलो। उसके अलावा इफ यू हैव पाइथन स्किल्स दे डू कम हैंडी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पाइथन पे कोड लिखोगे, राइट? इट्स अगेन वेरी गुड टू हैव स्किल डिपेंडिंग ऑन द टीम कि उसमें क्या स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, क्या टूल्स यूज हो रहा है। मे बी अगर वो टेक हैवी टीम है तो आप पैंडास जैसी लाइब्रेरीज को यूज करके आप उसमें डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आई थिंक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स की यू नीड टू वेरी गुड विद मैथमेटिक्स एंड या दो स्टैटिस्टिक्स, राइट? उसमें भी कितनी डेप्थ में जाना कि अगेन डेप्थ में तो आप जितनी मर्जी चले जाओ, बट द बेयर मिनिमम इज कि आप अगर डेटा एनालिस्ट को मिलो उसको यही ना बताओ कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, राइट? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ये मतलब इन चार्ट्स को कब कहाँ पे यूज करना है, राइट? कि किस टाइप के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किस टाइप का चार्ट परफेक्ट है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो इस टाइप की बेसिक टर्म्स है, राइट? बिकॉज आई टॉक टू लॉट ऑफ डेटा analyst aspirants, data analysis aspirants, and the very first thing I ask them is कि भाई अच्छा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, और ना तो everyone is just कि मेरे को पाइथन आता है। तो then I ask them कि एक्सेल कितनी डेप्थ में आता है, तो लाइक हाँ बेसिक फॉर्मूलाज कर लेता हूँ। आई एम लाइक यहाँ पर डेटा इंजीनियर, मेरे को एक्सेल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? डू यू फील कि मेरे को, मैं उनको अब ये बताता हूँ मेरे को क्या चीजें आती हैं, कि डू यू फील आपको बेयर मिनिमम इतना आता है? इवन दो आई नेवर लर्नड एक्सेल, वो सिर्फ कभी जरूरत पड़ी अपने काम के लिए तो मैंने इसको सीख लिया, एंड दे लाइक नहीं ये चीज हमने सुनी भी नहीं है। सो द मेन थिंग इज कि कोर बेसिक्स, देन यू लर्न दोस टेक स्किल्स, देन यू ट्राई टू क्रिएट अ गुड प्रोजेक्ट। एंड गुड प्रोजेक्ट का मतलब अगेन वो नहीं होता, that was the next question. या गुड प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सी एज ए डेटा एनालिस्ट मैं आपको बताता हूँ चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज इनटू डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट, right? Some of the companies they might have data engineers, you might exactly get what you want, but a lot of time data analyst को खुद ही वो चीज करनी पड़ती है, डेटा क्लीनिंग वाला काम। I'm not saying डेटा पाइपलाइंस लिखना, but once you have that kind of data set, उसको अपनी desired form में लेके आना। तो जो डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट होता है ना, उसमें you'll have to check for duplicate records, कुछ मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, डेटा करप्टेड तो नहीं है। आप अब अगर हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सेल यूज Now I can connect it with the point that you mentioned कि Excel में अगर ये चीजें कर सकते हैं हम, basically simple formula से भी हो सकता है। और I had some data a few days back, so as I mentioned digital marketing, उसमें वही है ट्रैफिक कितना आ रहा है, कहाँ सोर्स से आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा एड चलाकर उसको हम कितना उसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि ज्यादा इनकम आए बेसिकली। तो वही डुप्लीकेट एंट्रीज एंड ऑल, इसके बेसिक फॉर्मूलाज है, वो भी नहीं पता था मुझे। चैट जीपीटी यूज किया एंड इट वाज टू बेसिक, और अगर सोचने बैठे तो ऐसे लगता है कि बस पता नहीं कि एनालिसिस में क्या कर दूं, बट हाँ आपकी बात ठीक है कि बेसिक से स्टार्ट किया जा सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट, या कंटिन्यू क्या है? नो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, राइट? कि जो डेटा एनालिसिस में मेजर पार्ट रहता है उस पे फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड kaggle.com जहाँ पे आपको बहुत तरह के डेटा सेट्स मिल जाएंगे। दैट्स लाइक अ वन स्टॉप जहाँ पे आपको thousands of data sets आपको मिल जाएंगे जो already cleaned and prepared है for your analysis, right? Students they download, they just create visualizations on the top of those charts and then they're like हमने प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस वाले प्रोजेक्ट में कमी क्या है? नंबर वन थिंग इज जो 90% ऑफ द काम वो डेटा एनालिस्ट का होता है कि डेटा को क्लीन करना, टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कॉलम्स को यूज करना है, उसको नहीं आप समझ पाए, राइट? अभी क्या होता है कि अगर आप कोई एक्सेल फाइल, CSV फाइल आप देखो, उसमें आप 8, 10, 15 कॉलम्स होंगे जो फीचर्स होंगे आपके। जब आप एक रियल वर्ल्ड में जाते हो, कंपनी में जाते हो,
उसमें आप देखोगे कभी कभी 100 200 400 देयर इज नो लिमिट कि कितने कॉलम्स हो सकते हैं। देन आप उनमें से कौन से फीचर्स को सिलेक्ट करते हो, कौन से करते हो, आप डेटा डिक्शनरी को पढ़ना जानते हो। जो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो सेंस Proper. बनाना चाहिए उस राइट, वो जो आप चार्ट बनाने वाले हो उसकी सेंस बननी चाहिए उस डेटा से। एग्जैक्टली, क्या राइट। सो दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग कि आप वो वाला पार्ट तो मिस कर रहे हैं। अब इसके लिए आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट्स, उसमें उनके पाइथन के स्किल्स भी यूज हो जाएंगे, डेटा एनालिसिस के स्किल्स, जो भी डेटा क्लीनिंग करना है, जो इम्पोर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा एनालिस्ट है वो सब यूज हो जाएंगी। वंस दे हैव दैट क्लीन डेटा सेट, उसके ऊपर वो दे कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड देन दे कैन कम अप विद द केस स्टडीज, राइट। एंड देन देयर इज अनदर पार्ट ऑफ दिस कि एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो उनके थोड़ा केस स्टडी भी वो बना सकते हैं कि what kind of problem they were trying to solve and what were the outcomes. So that's what an end-to-end project means कि आपने data cleaning से लेके EDA से लेके आपने पूरा proper उसकी visualization करी and then you're also able to explain कि what kind of impact you were trying to create with that project. Makes sense. What was that website that you mentioned for getting data? It's called Kaggle.com. Kaggle. I can share the resources. Okay. Yeah. All right. So there was always my question because if I talk about my field, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, तो अपना पोर्टफोलियो से स्टार्ट करो, ट्रैफिक लाओ और बेसिकली ट्रैफिक ही लाना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो तुम उसको एक एज अ प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हो। बट ऑन योर एंड आई हैड नो आइडिया कि डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है। सो दैट्स अ गुड इनपुट की डेटा कहीं से डेटा उठाओ, द वेबसाइट यू मेंशन उसको क्लीन करो, उसका डैशबोर्ड काइंड ऑफ या फिर चार्ट्स वगैरह जैसे भी बनते हैं वो बनाओ, एंड दैट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट टू शोकेस। I think I also added on one main point कि आप डेटा को वेब स्क्रैप करो। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि जो वेबसाइट्स ऑलरेडी है ना, आप उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल IMDb वेबसाइट है, IMDb पे क्या होता है, आपकी मूवीज होती हैं, उसकी रेटिंग्स होती हैं। अब वो मूवीज, उसमें भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। आप पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके वेब स्क्रैप करोगे तो उसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा फॉर वन पर्टिकुलर मूवी। अब आप उसके हिसाब से आप कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अच्छे कि आपने शाहरुख खान के करियर को एनालाइज करना है, तो क्या हुआ, मे बी यू कैन फिल्टर आउट ऑल द मूवीज जिसमें शाहरुख खान ने एक्ट किया हुआ है। देन यू कैन फिल्टर आउट द ट्रेजेक्टरी कि भाई पहले तो ये 9.8 रेटिंग वाली मूवीज दे रहा था, धीरे धीरे 6 हो गया, फिर 10 पे पहुंच गया। एंड देन यू कैन प्रेडिक्ट एज वेल फ्रॉम प्रीवियस डेटा। एग्जैक्टली, राइट। सो ये चीज होगी, बट अगेन दिस इज समथिंग जो पर्सनलाइज नहीं है, राइट। इफ यू आस्क मी कि if I was at this time कि मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, because now I have प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेरे लिए मैं अगर हॉबी प्रोजेक्ट्स करूं, अनलेस दे आर वेरी गुड, या फिर अगर मेरे को कोई पर्सनली किस चीज का शौक है, आई डोंट थिंक सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस है। कंपनीज विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि मैं अपने डे टू डे जॉब में क्या काम करूं, राइट। बट एज अ स्टूडेंट इफ आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अ गुड प्रोजेक्ट विल बी अ पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम, राइट। सो लेट्स से यू आर give me a scenario कि कोई स्टूडेंट, let's say स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब सर्च, राइट। उनको ये नहीं पता चल रहा वो कब अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे, कहाँ पे अप्लाई करे, वो चीजें नहीं होती। सो आई केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा का स्टूडेंट था, ही डिड वन ग्रेट प्रोजेक्ट जिसमें उसने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल की जॉब्स ज्यादा किस सिटी में है, एंट्री लेवल की सिटी में है, कौन से स्किल्स मांगते हैं कंपनीज। तो इस टाइप का उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया। ही वेंट टू लिंक्डइन एंड उसने अपना वेब डेटा को वेब स्क्रैप, राइट। नाउ ही हैड ऑल द जॉब्स, पिछले एक हफ्ते की लिंक्डइन जॉब्स का डेटा था। फिर उसने वही अपने डेटा को क्लीन करा, जो भी उसको काम करना था, यूजिंग हिज कोड, ठीक है, उसने वो सब करा। एंड देन ही स्टार्टेड एनालाइजिंग दैट डेटा कि भाई कौन सी सिटी में फ्रेशर्स की कौन सी जॉब्स हैं, इफ ही वांट टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर फुल स्टैक डेव, उसमें कौन से स्किल्स आर मोस्टली इन डिमांड, ठीक है, व्हाट आर द टॉप 3 स्किल्स फॉर डेटा एनालिस्ट जो हर कंपनी मांग रही है। तो इस टाइप की उसने एनालिसिस कर दी। एट द एंड ही आल्सो हैड अमेजिंग विजुअलाइजेशंस, जो चार्ट्स वगैरह होते हैं, राइट। सो दैट्स द एंड टू एंड प्रोजेक्ट। सो दिस इज समथिंग दैट अ गुड प्रोजेक्ट मींस। ना आई हैव पर्सनली क्लियर विजन हो गया मेरे को कि कैसे चीजों को प्रोसीड करना है इफ यू वांट टू मूव इनटू योर डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और एनालिसिस एज वेल, एंड आई कैन नाउ कनेक्ट इट विद माय फील्ड एज वेल कि अगर इस फील्ड में ही आगे इस चीज को लेके जाना है तो किस तरीके से। नाउ आई वुड से कि डेटा स्क्रैपिंग वुड बी अ गुड स्टेप टू मूव ऑन,
from my end, क्योंकि और अगर मुझे उसमें नहीं भी जाना है तो I already have data on like we have lot of professional others, yeah. dashboards, right? अपने Yeah, YouTube yeah. canvas होते हैं, Instagram canvas होते हैं. The thing is, how do you utilize them to overcome, right? As the digital marketing expert, आपका काम है leads लाके देना कंपनी को, right? And how they translate to you कि आपको या तो अच्छे views लेके आना है या तो जो भी आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप कितने कस्टमर्स तक जा सकते हो. Yeah. The main thing is, how do you channelize all your data to generate those leads, to generate those views, whatever your goal is, right? So, I mean, आपकी फील्ड में भी ये चीज सिमिलर हाँ, है. नेक्स्ट स्टेप उसमें भी डेटा एनालिसिस ही है, एक अच्छा जो है रिजल्ट देख के कोई भी डिसीजन लेने के लिए. ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस सोशल मीडिया पार्ट ऑफ योर लाइफ. हाउ डिड यू स्टार्ट एंड you have amazing number of followers for the number of posts that have it. Was it your first try? How did you get into it? Just give me a like backstory. Okay. So again, that's also a very interesting part. I honestly never intended to be not a data engineer. I intended to be a data engineer. I worked so hard for this profile, but to be a content creator, मेरा कभी ऐसा कोई plan नहीं था, right? Because I was that underconfident guy जो अपनी आवाज को सुनने में confident नहीं था, अपने खुद को कैमरा के आगे देखने में confident नहीं था, and it happens with everyone. कि most of the guys I'm pretty sure कि वो ये चीज feel करते हैं, right? But then when मैंने आपको बताया कि जब मैं फ्रेंच सीख रहा था अपने कंप्यूटर वाले फेस में, then one thing I was actively doing at that time, क्योंकि मेरे को पता था कि in future अगर मेरे को एक स्टेबल इनकम चाहिए, अपनी PR चाहिए, वो सब चीजें होती हैं. You need to get a good job in Canada, right? So mid of the studies में मैंने अपनी जो डेटा इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, and then I started networking with a lot of people. अगेन जो आपने बोला आपने, क्योंकि मेरे जो मेंटर थे तब ही वॉज इन इंडिया और चीजें थोड़ी काफी मुश्किल होती है टाइम जो उनको करते हैं. आई नीडेड समवन जिनको डेटा इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस हो, राइट? सो देन स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ मेंटर इन डेटा इंजीनियरिंग, और वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा? लिंक्डइन पे. तो थ्रू आउट दैट प्रोसेस आई वाज नेटवर्किंग विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स. ठीक है, उनसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहा था कि भाई मैंने ये चीजें सीख ली हैं, मैंने ये रिसर्च करा है, आर दिस स्किल्स स्टिल रेलिवेंट, मैंने ये प्रोजेक्ट करा है, डू यू थिंक इट्स गुड इनफ टू गेट मी जॉब, ऐसे वैसे. I was asking them a lot of questions. तो at that time I realized कि यार मैं नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, I am able to talk to a lot of professionals, but then there are students who might not feel confident to reach out to people, but they still need access to this kind of information where they can translate those skills into the job, right? कि वो चीजें सीख के, because at the end जो बंदा इंडस्ट्री में है, जो बंदा वो चीजें सिखा रहा है, it will be very different from what you're taught in college or university, right? So I thought, okay, let me create a YouTube channel and just start posting these kinds of videos on that. But then there were two major problems. One was I'm not a social media guy. मैं videos कैसे बनाऊँ, कैसे record करूँ. Number two was the credibility of information. कि अगर मैं लोगों को बताने लग पड़ा, भाई मैं खुद तो जॉबलेस बैठा हूँ, मैं तो किसी को क्या बताऊँगा जॉब कैसे लेनी, right? So then I came up with this idea कि okay, दोनों का एक ही solution है कि I start talking to professionals and start recording what they have to say and start posting it on YouTube. Okay. Right? It takes away the part कि जहाँ पे वो credibility की बात आई थी, because again it will be the professional who will be delivering the information. And but second problem अभी भी थी कि how should I record, right? तो starting में I still remember, I still have that very first channel. It's called Your Average Guide. उस पे अभी मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं करा, सब है. तो जो मैंने अपने पहले 5-6 वीडियोस डाले, so I started reaching out to people in my inner circle जो अच्छी jobs कर रहे थे. I told them, and again I'm very fortunate to have those kind of people around me जिन्होंने मेरे में इतना faith दिखाया कि, because it's very hard for you to get your first let's say you starting a podcast channel or any kind of YouTube जिस पे आप दूसरे पे depend करते हो. That first person who volunteer without, क्योंकि जब आपके ना मान लो 100 के सब्सक्राइबर हुए तब तो हर कोई आपके चैनल पे आना चाहिए. When you haven't even started, right? So that person holds a lot of value. तो I'm still fortunate कि भाई उन्होंने मेरे में वो चीज कॉन्फिडेंस दिखाया कि यार ये बंदे में कुछ है, ये कर लेगा. Thank you so much, sorry. I can see myself in this scenario. Oh, I didn't realize that I'm the first one. Yeah. Oh, okay. So anyway, coming back to our conversation, right? So I simply started an audio call with them. ठीक है, तो मेरे पास कोई माइक नहीं था, कुछ नहीं था. I didn't even know कि माइक, एक्सटर्नल माइक एग्जिस्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं. तो मैं अपने कमरे में बैठ के, ताकि आसपास नॉइस ना आए,
एक मोटा कंबल अपने ऊपर ओढ़ के फोन की ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था। एंड वो अगर 1 घंटे कन्वर्सेशन की बाद में पूरा स्वेटी हुआ पड़ा था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम, राइट? सो टू ओवरकम दिस आई केम अप विद अ प्लान कि पहले अपने वॉइस से कंफर्टेबल होता। सो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय ऑडियो कॉल्स। वो तो फोन पे फीचर होता है, यू प्रेस अ बटन, आप ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू दोस फर्स्ट 5-6 स्पीकर की जिन्होंने वॉलंटियर करा कि हाँ भाई हम कर लेंगे अपना टाइम निकाल, अपना टाइम, राइट? सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार 5-6 वीडियो अपने ऑडियोज को एडिट करने के बाद अगर आप YouTube में जाओगे, दे आर सिंपल प्लेन ऑडियो जिसके पीछे वेव फॉर्म्स वो आ रही हैं और उसके ऊपर एक स्टैटिक फोटो है, ठीक है? तो आई गॉट कंफर्टेबल विद वॉइस में, कोई चल जैसी भी है मेरी वॉइस है ना, ठीक है, ठीक है। एंड अमेजिंग थिंग हैपन कि जब मैंने अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो डाली थी उस पे अगेन आई हैड 10 सब्सक्राइबर्स, आई स्टिल रिमेंबर। 8 मेरे घर वाले थे, उसमें 2 रैंडम को मैंने सब्सक्राइब करा एंड दे कमेंटेड कि भाई अच्छा अच्छा कंटेंट है। और उसमें जो कॉन्फिडेंस आया, वाज लाइक dude, this is good, it feels good, right? So that's how the thing started. Then I thought कि okay, now I'm comfortable with my voice, what's next, right? Easiest way is कि I started asking people similar way में. So instead of phone call, I told them कि अगर आपको Zoom का लिंक भेजो तो आप ज्वाइन कर लोगे। I'll just screen record a Zoom meeting and I'll post that. And again thankful to those people who volunteered and agreed. तो वो चीज़ भी अच्छी वर्कआउट करने लग पड़ी। Then came a part जब मेरे को जॉब मिल गई, I had couple of months of experience as well, वो credibility थोड़ी मेरी प्रोफाइल में आ गई, and I felt confident enough कि मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ, right? So I started doing that as well. So अपने first channel पे I posted around 100 videos, उस पे मेरे YouTube पे I was posting every single week. हर वीकेंड को मेरा ऐसा होता था कि फ्राइडे सैटरडे को वीडियो शूट करता था, सैटरडे रात तक मैं एडिट करता था, संडे मॉर्निंग को मैं अपलोड करता था वीडियोस। तो इट वाज माय लाइफ फॉर 1.5 year कंसिस्टेंटली। मेरे को ये था कि मेरे को कंसिस्टेंटली वीडियोस डालनी है, तो उस पे ओवर 100 वीडियोस मैंने पोस्ट करी एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू सोशल मीडिया थिंग कि भाई यूट्यूब पे बनाना है, एंड पीपल दे रिस्पोंडेड रियली वेल टू दैट, ठीक है? आई स्टिल मीट अ लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर जो मेरे को कहते हैं साहिल हम तेरे को तब से फॉलो करते जब से यू आर, आई फील सो गुड कि यार वो चैनल आप तक पहुंचा है, राइट? And I gained around 22,000 subscribers on YouTube in 1.5 year. It was a great journey then, but then I wanted to bring some sort of other content, right? I am that kind of person जो हमेशा अपने खुद के सेल्फ बिलीव्स, अपने पर्सनालिटी को, अपने अचीवमेंट्स को चैलेंज करता हूँ, राइट? आई थॉट कि यार साहिल दिस इज गोइंग गुड, बट अगर ये चीज अच्छी जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा यही चीज करेगा। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ सर्टन काइंड ऑफ कॉन्टेंट, बट द प्रॉब्लम वॉज कि आई वॉजंट रेडी टू क्रिएट, कि जैसे ब्लॉगिंग करनी है, थोड़ा और इंटरेक्टिव कंटेंट, राइट? थोड़ी और इन डेप्थ चीजें, कि आई डोंट वांट टू क्रिएट अ शैलो कंटेंट कि जो हर बंदा क्रिएट कर ले, कि कुछ और अपने स्किल सेट में एक्सपर्टीज लेके आना। आई गिव माई सेल्फ 1 month ऑफ टाइम कि साहिल अगर तूने कर लिया तो यू विल कंटिन्यू दिस चैनल, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप पोस्टिंग, ठीक है? यू गेट बैक, टेक अ स्टेप बैक, यू प्रिपेयर फॉर दैट एंड देन यू कम बैक, ठीक है? तो that thing didn't happen, ठीक है? 1 महीना मैंने करा, I tried to create videos, वो मेरे पास अभी वीडियोस पड़ी हैं, रॉ वीडियोस मेरे पास अभी पड़ी हैं जिनको मैंने कभी एडिट नहीं करा, बिकॉज आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट कि यार ये वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा। सो आई क्लोज दैट चैनल, ठीक है? उसके बाद आई वेंट अंडरग्राउंड फॉर 1.5 year, ठीक है? पूरा सोशल मीडिया ब्रेक, I stopped posting. The videos are still live, but I stopped posting on those channels. They are no longer active. Both with my Instagram and both with my YouTube and YouTube, right? Then I prepared, but then इस बार मैंने अच्छे स्टडी करा how Instagram works, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहता हूँ, and then you basically came up with a plan. I had a plan, right? But the problem is, even this time I didn't want to create YouTube videos या फिर Instagram. मेरे को कंटेंट नहीं क्रिएट करना। द टाइप ऑफ कंटेंट दैट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, यू वोंट बिलीव कि मैंने इसके इतने बड़े बड़े गूगल डॉक्यूमेंट्स बना के इतने फेमस इन्फ्लुएंसर्स को भेजे हैं जिनको मैं कह लूँ ना कि प्रीच करता था यार बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो मैंने उनको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बना के जाए, आई टोल्ड देम कि यार मैं आपको बैकग्राउंड में हेल्प कर दूंगा, सिंस यू ऑलरेडी हैव रीच, यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट, दिस इज व्हाट पीपल नीड। उनको इमिग्रेशन के बारे में नहीं जानना, उनको ग्रोसरी के रेट नहीं जानते कि आलू कितने के यहाँ पे इंडिया में आप मल्टीप्लाई करके बारवेज मिल रहा है। हाँ, मतलब अगेन देयर वाज अ नीड जहाँ पे कोई एक बंदा आए एंड दैट गाय या फिर गर्ल जो भी है कि मतलब दे स्टार्ट
रियलाइजिंग कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को चाहिए क्या, उनको अपनी लाइफ में अगर अच्छा करना है, द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज कि अपने प्रोफेशनल करियर्स में अच्छा करें, किसी को बिजनेस करें, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट द क्विकेस्ट वे इज कि आप अच्छी जॉब लो, एटलीस्ट एक स्टेबल इनकम पे हो, देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि आगे क्या करना है, बिकॉज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक। पीछे हमारे पेरेंट्स की इतनी होप्स होती हैं, हम इतनी होप्स लेके आए होते हैं, सो आई वाज लाइक कि यार आप ये कर दो एंड आई नेवर गॉट अ रिस्पॉन्स। देयर वर कपल ऑफ यूट्यूबर्स जो कि अपने कनेक्शन के थ्रू हमारे रीच आउट किया, दे रिस्पॉन्डेड ओके चलो मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, नंबर लिया, दे डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग, बात करने के बाद भी फोन लेके नंबर दे के मैसेज को रीड करके छोड़ दिया एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक यार क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, है ना। फिर आई रियलाइज आई स्टिल डोंट हैव एन आंसर कि वो क्यों नहीं करे। देन आई रियलाइज यार किसी को तो करना होगा, साहिल व्हाई नॉट यू, चलो ठीक है करते हैं इस बार। बट दिस टाइम आई हैड अ प्लान, आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, आई हैड दैट क्रेडिबिलिटी कि जहाँ मेरे को पता था कि आई कैन डिलीवर द वैल्यू, जहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस था कि वट एवर आई एम डिलीवरिंग आई हैव टू मेक श्योर कि कोई मेरे को चैलेंज ना कर पाए। आई स्टिल बिलीव देयर आर पीपल हु आर बेटर देन मी, इन देयर विल बी पीपल, राइट, बट अगेन द पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन माय ग्रोथ, राइट, अगेन ये जो आप कंटेंट देखते हो, चाहे कैमरा के आगे अकेला मैं आता हूँ, बट इट्स नॉट कि मैं अकेला वीडियोस बना रहा हूँ, राइट, आई हैव माय क्लोजेस्ट ऑफ सर्कल जो कि तगड़ी से तगड़ी जॉब कर रहे हैं, राइट, कि पीपल दे माइट क्रेव टू वर्क इन दोस काइंड्स ऑफ कंपनीज, इन दोस काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं। that's how my confidence comes, that's how my credibility of my content comes कि भाई जो चीज मैं क्रिएट कर रहा हूँ it's well tested in the industry, whatever it is, right? So I came up with this plan and I thought कि okay चलो अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट करना, but I had only one thing in my mind कि जिस दिन मैं वीडियोस पोस्ट करनी शुरू करूँ, अगेन स्टार्टिंग में इट वाज वेरी स्केरी, ठीक है, अभी भी मैं अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करता हूँ, बट इतना दिमाग में था कि आई डोंट वांट टू बी एवरेज गाइड एनीमोर, आई डोंट वांट टू, मेरे पुराने चैनल का नाम था योर एवरेज गाइड, बट आई दिस टाइम आई हैड दैट माइंडसेट कि आई वोंट बी एन एवरेज पर्सन एनीमोर। आई कि जिस दिन मैं वीडियोस पोस्ट करने स्टार्ट कर दूं, एवरीवन इन कनाडा जो भी मेरे कंटेंट के कंज्यूमर्स हो, जो भी मेरे नीश हो, उनको पता होना चाहिए कि साहिल कोगना कौन है। दिस वाज माय माइंडसेट एंड दैट्स व्हाट आई प्रिपेयर्ड फॉर। and you have I mean अब मैं कहूँगा तो आप कहोगे कि नहीं अभी कहाँ है ऐसे, but you have achieved that thing and people know you for your content and the value that you put on social media. And that's what I'm trying to say, like to plan this I'm so blessed to have people around me जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा and the way we planned out the things and again I would say कि ठीक है planning is one part and then also थोड़ा इसमें luck factor भी होता है। आई डू बिलीव, आपने वो स्टार्टिंग में पूछा कि प्रेत में वैसे जब हम फन टॉक कर रहे थे यकीन करते हो, आई वो तो मेरे को पता नहीं, बट आई डू बिलीव इन गॉड कि यहाँ पे कि इफ यू पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स कि भगवान आपके एफर्ट्स को सुनते हैं कि दे शो यू द पाथ, राइट। सो अगेन प्लानिंग करना, क्रेडिबिलिटी बनाना, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो रिजल्ट भी दिखना वो एट द एंड वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। एंड वो रिस्पॉन्स मेरे को मिला स्टूडेंट से, मेरे को मेरे व्यूअर्स से मिला एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम एज वेल कि अगेन like you can create the best content in the world but if your consumers are not liking it then उसका कोई फायदा नहीं है, right? So वो चीज workout करी and that's how I entered into social media, how I'm continuing into social media and now I feel like कि okay the thing has just started, Yeah. right? अभी और बहुत सारी चीजें करनी है and even till there in this state I'm with the same kind of mindset कि I give myself deadlines कि साहिल अब इस तरह का content create करना है, you have a deadline, right? And if you are not able to do that, you don't deserve to post videos, right? But this time I would say कि I'm strong enough, I'm prepared कि जो चीजें अपने failure से मैंने सीखा है, so things are working out well. Well, you have changed my perspective on looking at things when creating content for social media, and I'm sure कुछ चीजें तो इनमें से मैं इनपुट करने वाला हूँ. That deadline part and the part when you said that I don't want to be that average guy, average guide anymore. And your video shows that you always any piece of content I would say you put on your Instagram, it provides some sort of information, some value to someone who's looking a job, who's new to the Canada, and the thing that people were doing earlier कि Canada का lifestyle दिखा रहे थे, and that's not into trend anymore. सबको अब
मतलब अब जॉब ढूंढना मुश्किल है सी, और आप वो चीज को अगर आप उसको इजी कर रहे हो सबके लिए, सो दैट्स व्हाट्स ग्रोइंग राइट नाउ एंड यू आर डूइंग रियली अमेजिंग जॉब. थैंक यू सो मच. और अब मतलब सोशल मीडिया पे आपने जो एक ग्रोथ अचीव करी है, इससे आपका कुछ नेक्स्ट कमिंग गोल है इससे आपका, या यू आर जस्ट staying into the job circle and you're planning to grow there? What's your plan for the future with social media and with your career? See, there are a lot of things, right? My career is something जो मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, but then there are certain things जो मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो मैं इस गैप को फिल करने के लिए करना चाहता हूँ, right? From career wise, yes, I have certain aspirations जिनमें again I feel like I have become comfortable in with my profile. And for past 2 months again, वही वाला, whenever you need to start something है ना, steps आपके वही रहते हैं. I've started talking to a lot of people. मेरे को जिस टाइप की प्रोफाइल, जिस टाइप की करियर ग्रोथ मैं चाहता हूँ, प्रोफेशनल ग्रोथ. I've started looking out for mentors, right? I've started preparing for my next step. अब वो मैं next step अपना करियर का कब लूंगा, it depends upon कि how well I can prepare, क्योंकि अभी टाइम की बहुत करंट चल रहा है. Otherwise, I would feel like कि अगर किसी को भी अपनी जॉब स्विच करना है, कुछ भी करना है, not the switch but प्रोग्रेस करना अपने करियर में, 3 to 4 months are good enough, right? But since वो मैं टाइम नहीं दे पा रहा, so I'm not quoting a deadline for myself. But again, that's how my professional thing is कि I want to grow into career and probably I'm going to explore the new profile, right? वो कैसे वर्कआउट करती है वो करता हूँ. Then there's a part जहाँ पे मैं actually में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता, right? So what I have realized is कि there's a huge gap in what students are learning at college or university versus what it takes to get a job. जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा कि स्टार्टिंग में हमने बात करी कि just having technical skills, they are not good enough to land your job. Right? Companies, they want to know how you can solve their problem and to express those kinds of things. That's also a skill that needs to be learned, that needs to be done. And that's what I have been trying to do through my content creation. अब मैं उस गैप को कैसे उस बड़े गैप को ब्रिज कैसे करता हूँ, दैट विल बी माय नेक्स्ट चैलेंज. मे बी आई विल क्रिएट मोर रिग्रेस कंटेंट जिसमें मैं डेडिकेटेडली और वीडियोस डाल रहा हूँ. मे बी आई विल ट्राई टू कम अप विद माय सॉल्यूशन, माय प्रोडक्ट, जिसमें आई कैन डिलीवर अ लॉट ऑफ वैल्यू टू स्टूडेंट्स. बिकॉज देयर इज अनदर थिंग दैट आई हैव सीन कि अगेन नॉट बैड थिंग फॉर एनीवन, बट आई फील लाइक कि whenever someone is weak, जो दूसरे बंदे होते हैं, they start exploiting them, right? And when it comes to students, that's what I feel like कि right now, just due to this job market, they are being exploited a lot, because I get a lot of one-on-one calls जिसमें students, they're not getting value for their money, right? They are being shown the wrong hopes कि ठीक है कि, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ना, जो एक्चुअल में उनको वैल्यूज चाहिए, जो उनको अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए चीजें चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग इट. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ब्रिज दैट गैप यूजिंग माय कंटेंट, बट देन आई फील लाइक इट्स नॉट रीचिंग टू स्टूडेंट. सो प्रोबेबली माय नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी टू बिकम बेटर एट क्रिएटिंग कंटेंट, जिसमें मैं और रिग्रेसली और स्टूडेंट्स को अवेयर कर पाऊँ अबाउट देयर चॉइसेस, and to come up with something that can help them to bridge that gap. At that, I just want key, because everyone can get a professional job, everyone can enter into IT. अगर अब मैं अपने ना जितने मेरे mentees हैं, whenever they book one-on-one call, they're very insecure, बहुत डरे होते हैं, right? And वो कहते हैं साहिल यार मेरी जॉब तो लग जाएगी ना. तो मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, भाई तो एक पत्थर उठा टोरंटो डाउनटाउन में ऐसे फेंक, वो तो किसी ना किसी IT प्रोफेशनल को लगेगा, राइट? अगर इतना मुश्किल होता तो फिर दूसरा बंदा IT में ना होता, राइट? द ओनली थिंग दैट दे मेड इट टू द अदर साइड इज जस्ट बिकॉज दे गॉट बेटर गाइडेंस. दे नो समथिंग, उनको कुछ ऐसा पता है जो शायद आपको नहीं पता. दैट्स वाई कि उनको 2-3 महीने में जॉब मिल गई, एंड यू आर स्टिल लाइक 6-7 महीने में जॉब नहीं मिली, राइट? टू मेक देम अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, दैट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप एज वेल. Alright, so we are looking forward to whatever you will be putting on social media and whatever product-wise. Let's say if you are planning to launch something, we'll be looking forward to it. Thank you so much. And I guess that I had a lot of questions. I have a lot of questions. These are 3 freaking pages. But I will let you go now because you had a very busy day and you got some time out for me and for the podcast. I'm really thankful, first of all, that you came and you got this time out just for me and giving me the chance
to just कि हम ऐसा कुछ बना पाए content wise. And thank you so much for your insights. And it was it's really good, and it's I don't know, I don't even have words right now. It's really good that you came here, and I loved it. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, Kamal. And I'm always there to contribute to our community, to our society, and whichever way it's possible. So I knew that you wanted to get some sort of information. You have some sort of question. Then the way you reached out to me, you said like you want to create something for people. You want to add value to their life. So whenever it comes to adding value to someone else's life, I'm always here to volunteer. So right now you are my mentor here, and I love it. And again, thank you so much. And with time, I'll grow. I'll learn more things. I'll get better at this as well. And I would love to have you back again. Awesome. So I'm just booking you for the next podcast. For sure. I'm looking forward to your growth, to Yeah. contributing to your growth, and wish you luck for that. Let's just grow together and help how many people we can. And For sure. That should be the end of the podcast today. Thank you. Thank you so much. It was really nice to meet you.